अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज के ट्यूटोरियल में हम करेंगे यूनिट नंबर 9 विच नेम इज़ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाहिर नहीं होता। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा तो आपने ज़रूर देखना है, पूरा देखना है। और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला हमारा ट्यूटोरियल आप तक बर वक्त पहुँचे। चलते हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाहिर नहीं होता। सवाल नंबर 1, वाई डिड द नर्स आस्क हीरा's सिस्टर टू कम? वाई डिड द नर्स आस्क हीरा's सिस्टर कम एंड टॉक टू हर? मतलब नर्स ने हीरा की बहन से क्यों कहा कि वो आए और अपनी बहन से बात करे। अब इसका जवाब क्या है? हीरा had severe बस एक्सीडेंट। हीरा ने या हीरा का बहुत सख्त बस एक्सीडेंट हुआ था। ड्यू टू इंजरीज, जख्मों की वजह से शी वाज नॉट गुड, वो उसकी हालत अच्छी नहीं थी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। शी मेड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, उसने उसकी बहन को बुलाया कि वो आए और उससे बात करे। थिंकिंग, सोचने का, दैट हर वॉइस, उसकी आवाज़, माइट एक्टिव हर सिस्टर्स नियरली डेड न्यूरॉन्स एंड ब्रेन्स, कि उसकी बहन आए। मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया, अब वो नर्स कह रही है कि वो आए और उससे बातें करे। वो सोचते हुए हो सकता है कि इसकी आवाज़ सुनकर उसको तकरीबन उसके मुर्दा अस्सी को लिए और दिमाग काम करना शुरू कर दे। उसको गहरी चोटें लगी हुई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि इसकी बहन को बुला लेती हूँ कि वो आएगी और इससे बातें करेगी, हो सकता है इसके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएं। ये था पहला सवाल। इसके बाद अब दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है, वाई डिड द नर्स वाई डिड द नर्स वाई डिड द नर्स disagree disagree with the doctor's point, with the doctor's doctor point of view। इसका मतलब है why did the nurse disagree with the doctor's point of view। point of view का मतलब नुक्ता नज़र, मतलब कि नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक क्यों ना किया। अब इसका जवाब है the nurse did not agree the nurse did not agree with doctor's point of view that Hira was helpless that Hira was helpless Hira was helpless and hopeless। इसको होपलेस लिखने
होपलेस अगर लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, इससे होपलेस बेहतर है इसका। अच्छा जी, होपलेस केस एंड वुड नेवर walk again in life। मतलब नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं किया कि हिना एक लाइलाज मरीज़ा है और ज़िंदगी में दोबारा कभी ना चल सकेगी। वो एक लाइलाज मरीज़ा है, वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं चल सकेगी, वो उसके पाँव या उसके पैर में काम नहीं कर सकेगी। Thinking that it was unwise to leave a patient unattended। Life is very precious, life is very precious, the chance should be given to इसका मतलब है थिंकिंग दैट इट वाज अनवाइज, उसकी बातें उसको छोड़ देना अक्लमंदी है। इस मतलब ये सोचते हुए कि किसी मरीज़ का इलाज किए बगैर उसको छोड़ देना अक्लमंदी नहीं, कि जो नर्स थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि किसी मरीज़ को उसके इलाज किए बगैर छोड़ देना ये भी अक्लमंदी नहीं है। और आगे है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, मरीज़ा को एक मौका मिलना चाहिए, मरीज़ा का इलाज होना चाहिए, उसको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये था दूसरा सवाल। अब बढ़ते तीसरे की सवाल है, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज of personality of nurse in the story। कहानी में नर्स की कुछ खूबियाँ बयान करें। इस कहानी में नर्स ने जो किरदार अदा किया है उसमें नर्स की क्या खूबियाँ हैं ये बतानी है। आंसर इज शी इज बिगनर, in the profession of nursing। मतलब कि वो नर्सिंग के पेशे में नई आई थी। आगे है, शी इज वर्किंग इन
She is working in ICU of neurology. ICU of neurology. Neurology. She is very sincere to her passion. She is very sincere to her profession. She is very profession to her profession. She is so kind-hearted. She is so kind-hearted. वो पढ़ी रहमदिल थी। अच्छा जी, और शी इज प्राउड ऑफ हर प्रोफेशन। उससे अपने पेशे पे फख्र था। शी इज सो प्राउड ऑफ हर प्रोफेशन। उसे अपने पेशे पर फख्र था। ये हो गया तीसरा सवाल। अब चौथा। Why did the nurses where there is well, where there is well, as well there is a way. Why did nurse ने क्यों कहा where there is well there is a way, मतलब कि इरादा हो कोई ना कोई राह ज़रूर निकल आती है। अब इसका जवाब है she said so because she proud it she proud it she proud it correct ठीक है। she proud it practically that a hopeless patient would be cured if you are willing to fight. If you are willing to fight.
मतलब उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसने अमली तौर पर यह साबित कर दिया कि नाउमीद मरीज़ भी सेहतमंद हो सकता है। अगर तुम्हारा इरादा उस काम को भी करने का हो जिसमें कामयाबी की बहुत कम उम्मीद हो। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही। उम्मीद है आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आज तक के लिए इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं। जो लेक्चर पहले हमने यहाँ पे दे दिए हैं आप उनको जाके ज़रूर देखें। और जितने भी लेसन पहले उसके पहले 8 लेसन हो चुके हैं, आप जाके वो ज़रूर वहाँ से सर्च करें। डिजिटल पाकिस्तान पे जैसे आएंगे आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। हाँ, आपने वहाँ से सारे लेसन अपने पास नोट कर लेने हैं और उनको मुकम्मल देखना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपके नंबर अच्छे आएँ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।